Hello students, I'm here with another video from the chapter of class 10th Science NCERT book, that is electricity. So before starting today's video, I would like to tell you all that till now what all things we have discussed in this chapter. So children, we have started this chapter yesterday and I have already discussed a few topics in this chapter, that is the introduction of this chapter, that is what do you mean by electricity, which means that it is a continuous flow of the charges, and from where is this charges going, these charges are going to be developed, as there are two different types of charges. First one is the positive charge and the next is the negative charge. So positive and the negative charges, these are means what happens, the positive charge is going to flow from one terminal to the another terminal, and on the basis of the presence and the absence of the passage of electricity from any substance, then there are two types of substance based upon this characteristics. So what are these two types of substances? These two types of materials are the conductors and the insulators. So children, what are conductors? Conductors are those substances in which the electricity can flow. Those substances which allow the passage of electricity, they are said to be as the conductors. And what about insulators? So insulators are those substances which will not allow the electricity to flow through it. So when the electricity is not flowing through any device, it is said to be as insulator. And for example, conductors are the metals, non-metals are not the insulators, or they are the poor conductors of electricity. Okay, there are a few exceptions also. We have already studied them in the chemistry class. We have already seen in some chapters back. Okay, then after that I told you what is the behavior of the charges, that is, the like charges are going to repel each other, whereas the unlike charges are going to attract each other. Okay, so when the like charges are going to repel, like charges means it is positive and positive charge, or negative and negative charge. Okay, so these two are called like charges. Like charges means ek jaise, same charges. So they are going to repel each other. Okay, whereas unlike charges are positive and negative, then here what happens, the attraction. Okay, it is going to attract each other. So this is what is about the behavior of the different types of charges, that is the positive and the negative charge. Next, what we will be discussing today is about electric potential. So we will be moving on to the next topic, that is electric potential. So what do you mean by electric potential? What do you mean by electric potential? Okay, so children, what is the meaning, what is the explanation regarding this electric potential is that when we take a small positive charge is placed in the electric field due to another charge, it experiences a force. Okay, those charges, when we are keeping it, then upon one charge, the next charge is going to show its influence. It is going to show the influence, and this is because of the work done, because of which what happens, the first charge works. Some work done is seen in the first charge. Okay, if two charges are kept in the electric field, then what happens, it is going to work. It shows the work done. Okay, it experiences some force. It experiences some force. Due to this force, what happens? Work is said to be done. Means some work will be done because of the force which is being experienced by the first charge, because of the presence of the second charge and the electric field in which it is being kept. Okay, so it is defined as it could be the force of repulsion, because if both the similar types of charges are kept in the electric field, it is going to show the repulsion. The electric potential at a point of electric field is defined as a work done in moving unit positive charge from infinity to that point. Okay, so if you say that
you have to, what is it? It is the work done in bringing unit positive charge, in bringing unit positive charge from infinity to that point. Okay, infinity to that point. It is the work done in bringing unit positive charge. Okay, it's not visible, I'll write it here. Positive charge from infinity to that point. Okay, so this is what is known as the definition of potential, electric potential. So electric potential कैसे हम डिस्कस करेंगे, कैसे हम समझेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब है कि it is a work done. How it is being calculated in the form of work done. कैसे होगा ये work done? It is because of the presence of the electric field. So what happens? Potential is denoted by symbol V. Okay, capital V, we write it as V, and then its unit is volt. Its unit is volt. Symbol is V, unit is volt. Okay, then a potential of 1 volt means, now how can you define 1 volt? 1 volt means 1 joule of work done. I said it is a work done. So work is being done in bringing one charge from somewhere, from infinity to the point where the work has to be, where the work done has to be experienced. It is said that when two charges are kept very close to each other and they are kept in the electric field, and because of this electric field, this charge is going to experience some force. Okay, this experiences some force. इस फोर्स की वजह से इस दूसरे वाले चार्ज पर भी एक और फोर्स लगेगा. अगर ये सेम चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, then what happens? It is going to show the repulsion force. Okay, so this repulsion force is because of the presence of the same kind of electric field. So some of the work will be done, and यही होता है क्या? Potential. So potential का क्या मतलब है? Potential का मतलब है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स इट इज द वर्क डन. किस चीज के ऊपर वर्क डन हो रहा है? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर वर्क डन हो रहा है, जिसको हमें इन्फिनिटी से उसी जगह पर लाना है जहां हमें ये वर्क डन एक्सपीरियंस करना है. ओके, द नेक्स्ट इज हाउ कैन यू डिफाइन 1 volt. 1 volt means it is a work done. What kind of work done? It is the work done of 1 joule. Okay, it means that it is the work done of 1 joule. Fine, work done of 1 joule in bringing in bringing 1 unit positive charge from infinity to that point. Okay, where the work done is seen. So what is it? It is just a very simple thing. We have fixed both the things. What two things we have to fix? Work done has to be fixed. Unit positive charge has to be fixed. ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि कितना वर्क डन होना चाहिए? 1 जूल का वर्क डन होना चाहिए, 1 जूल का वर्क डन होना चाहिए. किसके ऊपर होना चाहिए? दैट इज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज. और बाकी कहाँ से कहाँ आना है? वर्क डन जब करेंगे तो कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए ना, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी बिटवीन द सेम इन्फिनिटी टू द
point where it has to experience the electric potential. Okay, so it is said that the potential of 1 volt means it is 1 joule of work done in moving unit positive charge की जगह हम लिख सकते हैं 1 कूलम चार्ज. ओके, यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जगह हम लिख सकते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज. 1 coulomb of charge. Okay, so this is what is about 1 coulomb of positive charge from infinity to that point. I said unit positive charge. ठीक है, तो it was written that it is a unit positive charge. तो कितना यूनिट? 1 unit coulomb of positive charge in bringing from you have to bring that charge from infinity to that point. So electric potential means it is a way charge is placed somewhere else. You have to bring it in the electric field. So ये कैसे आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड से इन्फ्लुएंस होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे इन्फ्लुएंस करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड से इन्फ्लुएंस की वजह से ये चार्ज एक दूसरे चार्ज पर वर्क डन शो करता है. ये वर्क डन कितना होना चाहिए? वर्क डन होना चाहिए 1 जूल का. कितने चार्ज पर होना चाहिए? 1 कूलम के चार्ज पर होना चाहिए. कहाँ से कहाँ मूव करना है? इन्फिनिटी से उसी पॉइंट तक जहाँ पे हमको ये एक्सपीरियंस देखना है. ओके, सो इट इज मोस्ट कॉमन टर्म यूज्ड इन द इलेक्ट्रिसिटी इज हावर पोटेंशियल डिफरेंस इज देयर. ओके, सो इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया ये. नेक्स्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस. सो आई होप दैट potential electric potential might be clear for you all. Now what about the potential difference? Next is potential difference. What do you mean by potential difference? It is a difference in the electric potential between 2 points. What is it? It is the difference between electric it is the difference between electric potential between 2 points. Between 2 points is known as potential difference. Okay, it is known as potential difference. Now see children, एकदम सिंपल सी बात है. डिफरेंस जब भी हम बात करते हैं, डिफरेंस का मतलब होता है कोई दो वर्ड्स, कोई दो नंबर्स है. मान लो आपको अगर मैं बोलती हूँ फाइंड द डिफरेंस ऑफ 3 and 5, क्या करोगे आप? 5 में से 3 को माइनस कर दोगे, आंसर वुड बी 2. सो इफ आई से व्हाट यू मीन बाय डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब है हमें कहीं ना कहीं 2 यूनिट्स की जरूरत है. यहाँ पे क्या है? 2 लिमिट्स की जरूरत है, 2 चीज़ों की ज़रूरत है जिसके बीच का डिफरेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं. कंपैरिजन करने के लिए कम से कम 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है. यहाँ पर भी डिफरेंस की बात हम करेंगे तो डिफरेंस इट इज बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस. तो क्या है डिफरेंस बिटवीन? मतलब अगर एक पोटेंशियल दिया हुआ है, दूसरा पोटेंशियल दिया, इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस है, किस चीज़ का डिफरेंस? द पोटेंशियल. कितना पोटेंशियल है इस पॉइंट का, कितना पोटेंशियल है इस पॉइंट का, उन दोनों में से आप हायर में से लोअर लिमिट को माइनस करोगे, देन यू विल बी गेटिंग द पोटेंशियल डिफरेंस. सो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अभी जस्ट मैंने बात करी थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है इट इज अ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. एक पॉइंट कहाँ है? बहुत दूर है. दूसरा पॉइंट कहाँ है? क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है. वहां एक चार्ज को हम दूर से अपने पास एक पॉइंट में लेकर के आ रहे हैं. दिस वॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अब यही 2 जगह हो, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी से आ रहा है, दूसरा भी आ रहा है, ठीक है. तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो उसको हम नए नाम से जानेंगे, एंड दैट इज सेड टू बी एज पोटेंशियल डिफरेंस. सो यू आर टेकिंग आउट द डिफरेंस in the electric potential. You are taking out the difference
in the electric potential. Please remember, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? एक पोटेंशियल है किस चीज का? वर्क डन का. कहां से कहां वर्क डन हो रहा है? वर्क डन हो रहा है हमारा जब भी कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पर लेकर आया जाएगा. ओके, सो दिस इज व्हाट इज अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इट इज अ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट इज द डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ two points. Okay, the potential difference between 2 points and electrically it is defined as the amount of work done. अब अगर हमको वर्क डन के केस में डिफाइन करना होगा तब क्या हम करेंगे? इट इज डिफाइंड एज work done. It is defined as work done, or it is the amount of work done in moving. वर्क डन है तो मूविंग तो होगा ही, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मूव ऑब्जेक्ट करेगा ही करेगा. इन मूविंग वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज और अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वन लिखने की जरूरत नहीं है, अ यूनिट पॉजिटिव charge from one point to other. Okay, from one point to other. So this is what is about, this is known to be as a electric potential. Okay, so this is known as potential difference. मैंने अभी जस्ट कही ये बात कि potential difference का मतलब ही है कि एक लिमिट में से दूसरी लिमिट को हमें माइनस करना है. सो अगेन अब यहाँ हम दो केस में पढ़ सकते हैं. ऐसा एक है ये डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट इज द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 2 पॉइंट्स. सो हियर व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, if in the case of work done we will talk about. So in the case of work done, what it will be, the definition becomes, it is the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to another point. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जितना भी वर्क डन हो रहा है किसी भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज का, दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, दैट इज नोन एज पोटेंशियल difference. So how can you define, how can you write down the formula for this? Can we write down the formula for this? The potential difference, the formula for potential difference becomes, it is the work done, किसके कंपैरिजन में वर्क डन हो रहा है? क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्स. Charge moved. Okay, quantity of charge moved. Fine. So this is known to be as the potential difference. Fine. Now next is अगर ये सोचो, अगर हमको इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट, अगर इसको हमको सिंबल्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V, इसको हम V से डिनोट करते हैं, वर्क डन को हम W से डिनोट करते हैं, और चार्ज मूवमेंट को हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं. ठीक है, सो द फॉर्मूला बिकम्स V इज इक्वल टू W अपॉन Q. ओके, W अपॉन Q. So I'll just rub it off so that I'll get some space to write. Fine. Now, potential difference means W upon Q. Now, what the unit will become? 1 वोल्ट. अगर हम इसकी बात करें तो 1 पोटेंशियल डिफरेंस V है तो V को हम 1 वोल्ट से डिनोट करते हैं. वोल्ट इज ऐसा यूनिट. ओके, वर्क डन कैसे करते हैं? 1 जूल का वर्क डन और 1 कूलॉम चार्ज को हम मूव कर रहे हैं. 1 कूलॉम चार्ज को हम मूव कर रहे हैं. तो 1 volt becomes, it is the amount of work done in bringing 1 coulomb charge from one point to another point. Okay, so it's very easy that 1 coulomb का चार्ज को हमको मूव करना है
कैसे मूव करेंगे? जब तक उसको हम 1 जूल का वर्क डन अगर हम करवा रहे हैं, 1 जूल तक वो मूव कर रहा है एनर्जी के साथ में, so it becomes 1 volt. So how can you define 1 volt, children? It's very easy to understand. Now see, what is the SI unit of this potential difference? It is volt. Potential difference की भी SI unit क्या हो जाएगी? Volt हो जाएगी, ठीक है? Potential difference is also sometimes it is written as potential difference, PD. Okay, so what is the potential difference between 2 points? Is said that it is a 1 volt of said to be as 1 volt if, कब 1 volt हो जाएगा potential difference? 1 volt तब हो जाएगा, the potential difference will be said as 1 volt when 1 joule of work is done in moving, work is done in moving 1 coulomb of charge from one point to other. Okay, 1 point to other. Fine. So ये क्या हो जाएगा? 1 joule per coulomb. So what is 1 volt? This is defined as 1 volt. Okay, 1 volt of potential difference की बात हम कर रहे हैं, ये ध्यान रखना. पोटेंशियल डिफरेंस में अगर हमको डिस्क्राइब करना है पोटेंशियल डिफरेंस का, हम 1 वोल्ट का डेफिनेशन क्या देंगे? इट इज सेड टू बी एज 1 वोल्ट. पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कब कहलाएगा? व्हेन वी आर डूइंग द वर्क डन दैट इज अबाउट 1 जूल इन ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम टू डिफरेंट पॉइंट्स. ओके, विल बी ब्रिंगिंग 2 different charges from one place to another place. Okay, so this is what is about the potential difference, children. Okay, now I'll be discussing about the next thing, that is what is the potential difference can be measured by the instrument called voltmeter. So how can we measure this potential difference? ठीक है, अभी यहाँ आई थिंक समझ में आ गया होगा ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब. 1 वोल्ट हम कब कहेंगे? 1 वोल्ट तब कहेंगे जब हम 1 कूलम के चार्ज को मूव करने के लिए 1 जूल का वर्क डन कर रहे हैं. सब 1 है. ओके, सो प्लीज रिमेंबर. देन विद दिस योर पोटेंशियल डिफरेंस definition is complete. Now I'll be telling you about how to measure this potential difference. Potential difference measure करने के लिए एक डिवाइस है, उस डिवाइस का नाम क्या है? The name of the device is voltmeter. Okay, we measure potential difference using voltmeter. Okay, so the voltmeter is always connected in parallel. Okay, it is always connected in parallel. ऐसे एक बॉक्स है अगर तो उसमें V लिखा होगा and you will be having the readings. You will have one needle. So this is known as the voltmeter. Okay, अगर सिंबल में हमको ड्रॉ करना है तो एक हम सर्कल बनाते हैं, उस सर्कल के अंदर V लिख देते हैं. So this is known to be as the voltmeter. Please remember it is always connected in parallel. How to measure this? How to measure the how to measure the potential difference? We'll be measuring it using a voltmeter, and it is always connected in the where? It is always connected in the parallel across 2 points where the potential difference has to be measured. 2 points के बीच में हम इसको यहाँ पर कहीं फिट कर देंगे ताकि हम आराम से पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सके, क्योंकि हमें 2 पॉइंट का ही पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब कि मिनिमम 2 पॉइंट्स तो होंगे ही. ठीक है, सो व्हेन 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड we will be taking into consideration what? We will be taking in consideration of
these two points. Okay, so then only the potential difference will be measured. So voltmeter is going to always measure the potential difference across ends. It is always measured in across ends. ठीक है, across ends पे ही हमको measure करना है. Potential difference is always measured across ends. क्योंकि मैंने कहा ना, दो डिफरेंस का मतलब है कि दो पॉइंट्स हमें चाहिए. दो पॉइंट्स जब तक हम नहीं लेंगे तब तक हम किसी भी चीज का डिफरेंस नहीं दे सकते हैं. कंपेयर करने के लिए दो क्वालिटीज होनी चाहिए, दो क्वांटिटी हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं. ओके, नाउ a voltmeter has a high resistance, so it takes negligible current from the circuit. Volt term is used for voltage. Voltage is equal to potential difference. ठीक है, तो अभी voltage क्या है? It is the other name of the potential difference. Voltage is the other name of potential difference. Fine. Now, if you have to find out how much work done, okay, I'll be solving one numerical for this. First is how much, question is how much work is done in moving a charge of 2 coulomb from a point at 118 volts to a point of 128 volts. ओके, सो आपको मालूम है कि फॉर्मूला क्या होता है इस पोटेंशियल डिफरेंस का? फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन द चार्ज विच हैज टू बी मूव्ड. ओके, यहाँ पे क्या पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो इट्स वेरी इजी. पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, डिफरेंस चाहिए हमें 128 वोल्ट्स दिया हुआ है, माइनस 118 वोल्ट्स हम कर देंगे तो विल गेट 10 वोल्ट्स. ओके, अब हमको देखना है वर्क डन कितना हो रहा है. पॉइंट चार्जेस हमको दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस हमने फाइंड आउट कर लिया. सो 10 वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन पता नहीं, this charge we know that it is 2 coulombs, so we get by cross multiplying we get 20 joules. So 20 joules of work done has to be there for bringing the charge from point of 118 to the point of 128 volt. I think this point might be clear. So this was the solution which says that potential difference, the formula for potential difference is work done upon charge. So work done is denoted by W and charge to be moved is denoted by capital Q. So here I have directly written it in the symbolic form. So this shows that the work done, we don't know, we only are having the value of this charge, that is 2 coulomb, and we know that one limits are being given, two numbers are being given, that is two potentials are being given. So we will be finding out the potential difference by subtracting this 118 from 128. So we get 10 volt of potential difference is there. So for having this 10 volt of potential difference, how much work has to be done by 2 coulomb of charge? So we will be substituting the value of potential difference and also the value of charge. So we are going to substitute this. So we have substituted, see 10 volts हमने यहाँ potential difference की जगह रख दिया. We have found out to be
as the 10 volt. And then what about the work done? This was unknown because we have to find out how much work is to be done. So we'll be keeping it as W itself, and then we know that charge is about 2 coulomb. So अभी यहाँ पे find out करने से हमें क्या आंसर मिला? 20 joules of work is done to find out that work has to be done to bring the charge from 118 to 128 volts. Okay, and now I'm giving you one more question to complete. You will find out the answer and tell me in your online class. Okay, so please tell how much energy is given to each coulomb of charge passing through 6 volt battery. Passing through 6 volt battery. Potential difference generate करने के लिए भी we are using always the battery. Okay, so this is about the next question, which is as homework. You have to complete this and you have to give me the answer for the same. Okay, so with this I am completing today's video. I will be meeting you all in the next class with some more topics to be discussed related to with this chapter electricity. So chalo, that's all for today's video. I will be meeting you all in the next class.